Hello, am I audible? Hello. Yeah, Anirudh, you're audible. So, good afternoon, everyone. Hope you all are doing well. I'm Anuj Chhabra, the chairperson at CCET ACM-W student chapter. We at CCET ACM and ACM-W envision building a community of like-minded people who love to code, collaborate, and have fun in the tech-savvy society. Keeping the same in mind, we also invite interested speakers to discuss and share their skills and their expertise and also with other individuals. Over the years, we have been growing and involving other tech enthusiasts to share their experience and knowledge of their domain with other budding technocrats. Today, we have the speakers Mr. Ayush Basral, who is currently an SDE at Amazon, and Mr. Anuj Bansal, currently an SWE at Microsoft. We are honored to have them with us today to share their experiences and placement journey. I have no doubt that their insights would be invaluable to us and would guide us to get placed in our dream companies. To keep this session engaging, I would encourage audience members to keep interacting and ask their doubts. So, without a further ado, I would like to welcome Ayush sir on the stage. Hello. Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, sir, you're audible. Yeah. Which all years are you speaking to? Like a student from all the years, or it's just first and second year? So, they're from all the years, like first to third year. Okay, yeah. First of all, welcome on, and our CSC branch only, or we have other branches too? It's majority of CSC, but I think we have EC also. Okay. Hello everyone. Say, um, I try to solve all the doubts that students have, like on during the college and like how to get started with things, like which career path to choose. So I try to help whatever I have gained from my experience. First I'll give some insights from my end, and you guys can ask the queries, any questions you have. I'd like to start like where should a student should start, like how to get started in the college, like if you're in computer science or you want to pursue something in computer science, so how to get started. So first of all, the major career paths which are chosen after like a bachelor, 4 year of bachelor's are majorly like you may go into masters or you may go for job. So the most of the things I'll be telling will be from the job perspective. So like, let's say you are in first year. So starting early is the best possible way to enhance your skill. So just don't waste your time in college. Like try to when you're in first year and you start early, you have this opportunity to explore a lot of different things. But in third year, when you are starting, so you don't have that much time to explore and get your hands dirty with a lot of different things because you just have a limited time period, and you have to be prepared in 1 year for something. So one major thing with all this is start early. Um, I'll try to give a time span, like how you can divide your time based on when you start. Let's say you're starting in a first year. So explore as many things as you can, even from the development perspective and even from the competitive programming perspective. So explore as much as you can, spend as much time as you can on anything. So nothing will be wasted. Let's say because I have seen students asking like, what should we do? Like in which field we should go? We should go in data science and machine learning, or we should go in development. So what should we choose? So just try to answer those questions yourself because every field has the opportunities, and it's up to you how you enhance your skills in
and how you grab the opportunities in there. So let's say you go into data science, and there's someone told you, let's the data science and machine learning field is growing, so you should go into that. But it may not feel appealing to you. So even if you go just with a web development, and that is also growing a lot. So you have to try it on your own, get your hands dirty with as many things as you can, try different things, interact with people, join communities, get to know people from different fields. So that will help you answer these questions like what you should do, because you yourself know what excites you and in what thing you can put your extra efforts. So decide that on your own. But again, okay, this you can do if you start early only. And next thing, after doing this, so what to expect after 4 years? Let's say you have practiced some things and you are now what you know. So what to do now after 4 years? So don't wait for a job or something good to happen with that after 4 years. Try finding opportunities for yourself, like in your college time. If after the first year, there's time for internships, and you can always have some freelancing tasks on your hand. So just try to find opportunities in there, because like, unless and until you apply your skills in the practical world, they won't be of any use. So, uh, but first thing is you need to know what all thing is there in the market. So, like in what all fields or you all can go. Like it's not necessary that you have to go in web development, you have to go in machine learning only, you have to go in data science or QA. Like there are a lot of things there, and you just have to like look like where you fit in. Like computer, like in computer science, that doesn't mean कि आपको coding ही करनी है. मतलब you can go in QA testing also. You can be product managers also. So explore things and try to find where you fit in. So I'll just give a brief introduction, like what all things are there and what you can do. So first is like the basic track, the software developer. So the software developer majorly requires problem solving skills, because matlab, I'm saying software developer, I'm not saying Python developer, React developer, Java developer, because learning a programming language is not a big task, but how to implement it, how to design a product, that is a major thing in software development. So if you may not be good in certain programming language, let's say you know Python, you don't know Java, but you are a good software developer. You know how to make architecture, you know how to build a product. So that is software development. Next is this data science, machine learning. So what frankly speaking, on jobs, from the perspective of jobs, directly after bachelor's there are not much jobs in these sectors like data science and machine learning, because these things are very very vast, and for jobs they mostly prefer people with masters. So if you are interested in this field, try gaining experience in your bachelor's, try internships. There are many campaigns going on, there are many competitions going on, join them. But try to go for masters then if you are planning your future in machine learning data science. And next, which I feel like people who don't like uh, coding much, but they like products. They like they have uh, good thoughts. They have very good ideas for the products, and they can visualize the products better. So they can always go into product management. So and it is a very fast sector. Like obviously, like directly after bachelor's, you have to like go to assistant product manager role or something, but there are opportunities. But it's just how you approach it. So for that you need to have internship experiences. Try with some startups. Like for internship in your college period, you don't have to always like look for big companies.
work with startups, gain experience, build your portfolio, build your contacts. So that will help a lot. And if you want to be product managers, like it doesn't require any certain specifications. Like you can be from any field, like computer science, civil, electrical, mechanical. It just you have to be an inbuilt product manager in your own. Like, there are certain like courses for a year or 6 month courses for product managers also, but you don't even need that if you can reflect those skills on your own. I have seen people like they even like they don't have any computer science experience, but they have experience building products. They engage with people. They have ideas for the product, how they interact with people, how they manage the team. So that experience has helped them land in the product management role. And for the product management part, go with like have certain data analytics skills, learn databases management. So these are all plus points. So explore yourself, whatever field you want to be. You'll find a lot of resources in there. But don't expect within 20 days or within a month you'll find something good in it, or you just have to be consistent in it. And like computer science is all about consistency, be it anything like you're developing or competitive programming. But be consistent, you will land there where you want. So next thing I want to discuss was like how can you find and grab opportunities during your time in college. So um, like let's like don't just rely on your curriculum, because you also are well aware like what we have in curriculum is not very applicable in the like outside world. Like practically वो चीजें उतनी अप्लाई नहीं हो रही. जो एक्चुअल में हमें प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी है, जो इंडस्ट्री लेवल स्किल्स सीखनी है, that we have to do it on our own. So and रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है किसी चीज के लिए. लाइक लेट्स से लाइक जैसे कि हमें कोई इंटर्नशिप नहीं मिल रही, लाइक वी वांट टू बिल्ड अ लार्ज स्केल प्रोडक्ट, but we are not getting any internship or to work with a we are not getting any freelance tasks to work with a big company. So you have events going on in your college. Approach your teachers like or approach coordinators like will build a product for it. Let's say you have your college fest. So like we'll build an app for our college fest on our own. So try to make opportunities for your own. There are a lot of hackathons going on online and offline. In Chandigarh itself, nearby colleges have hackathons. So try participating in those. Like even though like you don't get something from like you don't build and you don't have much experience, you will learn from there like what people are thinking. Like like what generally happens in hackathon is they give you certain problem statement or certain theme. You have to come up with a product in that particular area and build it. So you'll see like you'll find the ideas like how people are thinking, what ideas they came up with, and there you'll see like people building MVPs in one night. So you can learn a lot from that. So gradually, like let's say you went to first hackathon, you were not able to build anything, but if you वहाँ एक मतलब वहाँ you have spent 12 to 16 hours, so you must have seen people, you must have talked to people, you must have built contacts. So that all helps in health. And I say to proceed in computer science, you need to have teamwork. And what team you choose on will comes with contacts only. Like you have skills, but but you alone, it's like if you're building a very large scale, let's say, like I was saying, building a app for college fest, let's say. So you working alone on it won't reflect much. If but if you say you're working with a team, you work with a team and build this thing, and that will reflect much. Like
because you have to manage multiple things. Someone working on front end, someone working on back end. Let's say two or three people working on back end. You manage all that all together. So that is something you have learned in there. Working in team and building a code base in a team. So that will help a lot, like on your resume also. So grab opportunities. Like you'll find a lot. Don't just sit in your college and see कि something will come to me and then I'll do. Don't just wait for that. Next, I'd like to discuss is yeah. So from the job perspective, the major thing that you all need to prepare is DSA. If you are going into software development, so it may be possible like some people don't like DSA, like some may love problem solving and some may not. So, but it is like reality, like for landing a job, it somewhere is like a necessity for it. So, but you can plan accordingly. So you don't have to spend a lot of time in there. Like maybe you love development, but you don't like problem solving. So that's okay. But landing a job will require that. And actually, problem solving is a necessary skill. You may find it useless कि हमने एरे रिवर्स कर लिया, बट एक्चुअल हमारे इसमें क्या यूज हो रहा है कि बाइनरी ट्री इन्वर्ट कर लिया, तो एक्चुअल हमारा मतलब कोई ऐप बनाना है उसमें क्या यूज हो रहा है उसका यूज होता है. एंड maybe you will be able to apply उस टाइम पे very easily. But for jobs and for interviews, you'll need to do that. And and you can do it very easily if you have a very planned schedule for it. So let's say you're starting from first year and you just don't want to do it for the sake of you don't love problem solving, you don't want to do programming. You just want to learn DSA for the sake of jobs. So just spend a day, matlab 1 hour a day. If you're starting from first year, that will be more than enough till you reach third year. And suppose you are in third year, then you are starting. Even like you can be confident to learn DSA to crack Spang level companies in 6 to 7 months. Obviously, you have to put in more efforts. Obviously, like but what the myth say, if someone starts from early days or they start from DSA, they just get lost in that particular, because if you go on online, you will find a link between links to certain like link list ये links link list reverse उसके ऊपर ये question, so you'll get lost in one particular area only. So you have to prepare, like you have to prepare a proper plan for that and work on it accordingly. Like I'll also share like how to plan for like if you're for 6 to 7 months or having a 1 or 2 years plan. So how to make your schedule. I'll also share that. But landing a job in software development will require a DSC. So don't skip it. Like we don't like it, so we don't do it. So don't do that. Spend some time in it. And if uh, you love problem solving and you don't have any experience in development, that will also do, because what uh, these product companies look for, they look for good problem solvers. So if you have good experience in problem solving and competitive programming and almost zero experience in development, so that will be like some 80 to 85% in your favor. And on the other hand, if you are very good in development but you are like zero in problem solving, so that will be like 0% in your favor. But if you're good in problem solving and you also have projects, so that is a win-win for you. So try to utilize your time like in all the areas. Be Practice DSA, make projects, and to build your resume. Um, you don't have to need to have a lot of projects on it in your whole college time. If you have 1 or 2 good projects in which you have worked with team,
there are large scale products. So that is more than enough on your resume from the project's perspective. And even if you can get into open source, that is really good. So there is Ubisoft, there is Wikimedia Outreach, and there is there is one more in India, that is Girl Scripts, of course. Sir, sorry to interrupt. These are all like a good thing to invest in. You will learn. Sorry, couldn't hear you. Your video is lagging. But let me just turn off my video. My voice is clear, right? Yes, sir, your voice is now clear. It was lagging earlier. Okay, okay. So I was saying, try to contribute in open source. Like there you'll find how to understand really big code bases, and how to matlab, even when you are working for big companies, you have to work on a very small feature, but it may affect the whole code base, so that you can get understanding from the open source. And when you work in open source, you get to learn a lot of other tools like Git also, and you may get to use cloud computer like AWS and GCP, these all things. So these all are plus points. So try, and if you work on real life projects with either in open source or either with some startups or product of your own, so you will get to, because these all tools are used in it. So you will learn these, and these will always be a plus point on your resume. Like this Get. Get is like it is a major skill. It's not just pull push. इतना नहीं है. Get is lot more than that. So either spend the ACM can have a workshop specifically on Get, because like because these all things will be required, and you are a QA or you are in the product manager. You need to learn these things also. So uh, when you're in computer science, apart from this coding, there are few generic skills that you all need to have if you are in computer science. Thereafter, you can be you can be a machine learning engineer, you can be a QA, you can be a data analyst, you can be a software developer. But some generic things you all need to know. And for even for the DSA also, like basic DSA, everyone should have, because like it is actually coding. Like even if you are making big products, like you are working in Python or Java or some other programming language, so the basis is based on this data structures only. The whole what like in what scenario, what data structure to use, what will be an optimal choice of data structure. So these all things you'll understand only if you practice DSA. So basic DSA should be known to everyone. You should all learn that. It's not necessary everyone to do competitive programming and spend day and night on it. That's not necessary. But basic DSA, you should all spend some time on if you're a computer science student and you're planning to have your career in the computer science. So I'm not saying कि just पूरा DSA ही करो attend. The basic DSA should be there even if you don't like it. So it is necessary, because you are not a good software developer if you are not known to like the optimal data structures or the optimal algorithm. So how you will make a optimal product? So practice that, and obviously from the job perspective, and that's also necessary. So one more thing, I've explained like what to do and what not to do. One thing more, in your college time, just not waste your time and all कि हाँ कि fun करना है या कुछ, but because कि you need to have like a little time. मतलब if you're starting from first year only, now 1 to 2 hours a day for this thing will be more than sufficient for you when you reach your end of third year. So if you're consistent with that, that's more than enough. And or we just बोला कि don't waste your time in fun.
that doesn't mean you don't have fun, but enjoy your college, but also focus on your career. मतलब they मतलब if you are starting in third year you may get to something good, but वही कि वो थर्ड ईयर के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. You will be you will be able to learn DSA after that, but that's the thing कि थर्ड ईयर्स में ऐसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स में मुश्किल होता है, तो उस उसके साथ तुम्हें अपने करियर पे भी ज्यादा टाइम देना है, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, तो स्टार्टिंग से करो, मजे मजे में सब हो जाएगा थोड़ी. And वो एक कि don't just rely on your curriculum, like study it, get good CG. मतलब ऐसे सीजी का वो नहीं होता है कि नहीं कि कुछ दिक्कत नहीं होती है कि अच्छा ले सकते हो तो ऑब्वियसली लो, बट ऐसा नहीं है कि हाँ कि उसके सीजी के पीछे लगे रहे और मतलब कुछ और नहीं सीखा. डोंट डू दैट. If you can manage, like that's good, like get a good CG, that's always a plus point. कैसे कोई ये जज नहीं करेगा कि अच्छा सीजी है फिर इसमें कुछ नहीं है. मतलब that will reflect on you कि हाँ कि you have a good CG also, you are good in coding also, so that's a plus point for you. So spend your time wisely, like because there's a lot of time, like it's मतलब सही में बताऊँ तो when you are in CCET you have a lot of time to focus on yourself and also to enjoy, so balance everything and you land into something good, like whatever you want to, like even if you go to marketing, you need to have a good resume, even if to like any of the field you want to, even if you want to go into UI UX design, uh, you need to have a good portfolio. You need to have like the work experience, like because you can't directly you have done engineering. Who will give you a job of UI UX design if you have no experience? So you need to have a like some portfolio. You need to show like you have worked with certain people. You need to have show like this is my profile. This is what I have done in last 2 to 3 years. Even though like you have a very small freelancing task, but your product is out there live in the world, so you can show like I have done it. So and that will land you like at very good place, like whatever field you choose. So just spend time, explore opportunities, make contacts, and try to have something built by you in your mind before so that you before your interviews, so that you can show it to someone ki I have done this, I have done this. So that's why you have to hire me. So that's all from me. So if you have any questions, you can go ahead. Yes, I. I wanted to ask that when we get into open source and, for example, in web development or any other, even a small, like small projects, a small framework or something is so huge. Its code base is so huge that it becomes very, very difficult to understand, and it's like overwhelming to how to get started. So, uh, is there any like, can you help with that? Like, what's the best way of like getting started with open source? Yeah. Yeah, so yeah, like open source can be hectic in the starting, like finding the right organization to work for, right? Finding the right code base, like ki our skills will be utilized in that particular project or not. So finding that is hectic, but it's just you have to spend time. Like let's say you're going through a code base and for this particular organization, you spend a week on it. You'll get to know and there are things like good first bugs mentioned in there. So yeah, let's say there is something like you have to change the color of this box or size or something like, so you get to know कि, हाँ, I can do this. But in that huge code base, you'll have to understand कि कहाँ पे है. So, ideally, those organizations have their chat groups or they have their channel somewhere and talk to people there, communicate there, and surely you like just ask the right question with them. Like, don't just have to explain this to me, so no one will do that. But if you ask the right question there, कि हाँ कि I found that I found certain thing and I believe this and but will it affect something else? I'm like
if I change there, I believe it may affect some place other, so I'm right or not. So asking these things help you there. So asking the right question at the right time will, and also it and even though you don't get answer to this, and just make a fix. So start with very small things, and as the example I gave. So just fix it there because it won't be anywhere merged if they don't find it. Just make a request there. So if it worked, so like good for you. Otherwise, going through code, because that obviously open source the code, you can also set it up all on your local and test everything on your own. So well, like understanding a very large code comes with experience only, but just spend time on it and do it. Even if you don't get any help from them, like if you're not able to communicate with them, just try it on your own and just make a request first, make a pull request or push request. And if they merge it, then good. Otherwise, just try with some other organization or try spend some more time on that code base. Okay. Nice. And like I think next session is by Anuj, right? So for the open source, I think we'll be able to help you guys a lot. Sir, I wanted to ask what kind of projects Uh, should we work on, or what kind of project should we put on a resume? like with like for this question, like there is no specific essay what exactly project you should make, but it should be a project which you have worked with the team on, and it should be live, and um, and it should be if you could scale that project, like it could be a very simple one. Let's say you have made some website for book like ticket booking website, right? Just a insider type of this. Let's say you have tried to make something like that, not exactly that. So if you have taken care of scaling, and you have like a backend which can handle like let's say 1,000 or 1,500 people. So and you know your project inside and out. Like you don't have need to have a very big project, and you don't have need to have a lot of projects. One minimal good project will work. It's just you need to know everything in it. Yeah, if you have actually done it, so you know like you have taken care of caching in there, or if you are bit, you need to be able to answer those questions like like this was our target audience, so uh, we anticipated we may get this much request, so that's why we choose certain things. So you need to answer that. It's not the like you need to have a very big project, but whatever you have, you need to know it inside. Okay, sir. Thank you so much. So, what are the projects that you will suggest for a non IT background student to get an IT job? What are the programs like job of what programs do you recommend? As a programming language, yes, the technology too. I'm talking about in That's the language. question, right? Uh, Yes, so for non IT background, Language. like Oh, yeah, yeah. yeah. So there is no specific language I'll say, but like my personally, what I suggest is certain something else. But I actually like the companies don't like care for it. Like if you are getting into the big product company or something, so they don't care for a very certain any certain programming language. They just want you to be a good problem solver. So I say practice DSA. Practice DSA in languages like I prefer C++. So it's not necessary for you to do that also. It's just I believe you get to have a better understanding of the language and what's happening in there. Like you get to know the like why that data structure is there and how much memory it takes, and is it optimal to use in there or not. You get a better understanding of that with C++.
but you can use Java also. Java also helps. You can use Python also, but it's like it's my personal preference is yes, C++, but don't just. But if you learn Python, you will be able to build projects in there also. If you learn Java, you will be able to like make build good back. You will be able to make projects in there also. Like many So do learn any language. Sorry. so many do recommend like Java. You should do Java, or like the most basic language like Python, so you can get a job. So I am asking that what Actually, particular. no, no. Yes, yes. There is like if you are going for like if you want to be a Java, like few companies have post like Java developer, Python developer. So according to me, like it should not be restricted to certain programming language. So if you have Okay. learned one program, let's say you start with Java, learn it, do DSM and practice it, make a project also. So another day if you get to work on Python, you should be easily able to learn that language because you at last what you have to do is you have to make a project on it and the product you have to go through all like what DAC like what data structures you'll use, what algorithms you will use in there. It's just the syntax is different, but the main logic behind it will be same in whatever language you use. Okay, syntax you'll just yeah, okay, how to declare an array in Java will be different. How to declare in Java array in Python will be different. But it won't take much time to you to learn a new programming language if you are actually like if you're using a language to solve a problem or build a product, not just the sake of learning a language. So if you're मतलब, good in Python language is not a thing, but good in problem solving or good in software development is a thing. So be a good software developer, a good problem solver. Don't be just good in one programming language. Okay. Pick any. Like there is no restriction. Like if you want to go it easy, like हाँ मेरे को whatever सीखना है, go for Python. If you want to actually learn कि how an array is made, how much space it stores, why it has been taken there, then learn Java or C++, to learn actual OOPS concepts and like but if you like directly यहाँ से मेरे को but if you have to code fast यहाँ से मेरे को competitive programming कर रहा हूँ मेरे को 10 लाइनें लिखने के बजाय 4 लाइनें लिखनी है then go for Python. So there is no restriction to anything. Like pick any, be good at it and और उस पर रिस्ट्रिक्ट ना होगी एक सीख ली तो कभी किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है डोंट जस्ट से कि मेरे को लैंग्वेज नहीं आती ट्राई टू लर्न इट एंड यू विल लर्न इजीली एनी अदर प्रोग्रामिंग. So which platform do you recommend to learn any language? Like also platforms बहुत सारे हैं but and let's say you are starting from zero so ideally what I suggest is like first learn the concepts like learn why what is this data structure and why is it being used and what is this algorithm used for. So that the best thing is like there is a book Forman like data structures and algorithms. The writer's name is Forman. Study that. So don't and it has like you will also find a proper plan in it. So you won't get distracted. So study Forman. Don't focus on the codes in there. Just study the concepts. So you will understand the concepts. Then go on week for weeks. Week for weeks will have the like the basic. Let's say you are studying array, so it will give you the basic operations on it. So Yes. like how to swap elements in array, how to delete an element, how to and same with any other data structure. Let's say it's a graph, so it will have a questions like how to delete a leaf node, how to delete root node, how to swap nodes in there. So these all things just focus on this. Don't directly jump on कि हाँ की big questions की मैंने book से पढ़ लिया कि what is a graph, so I directly go for questions पढ़े. उससे पहले learn operations stuff. मतलब कोई भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें तुम्हें करना तो ये है कि बीच में स्टार्ट करोगे इधर रिमूव करोगे इधर नोट उठा के कहीं और रखोगे ऑपरेशंस तुम्हें आने चाहिए गो फॉर इट एंड जब इतना कर लिया उसके बाद you have a lot of sites in there. You have Hacker, HackerRank, codes. You have to practice yourself. Go Yes. Yes. on any platform or lead code. मतलब आजकल like there are proper sites on lead code also. So go on there. Like resources की कमी नहीं है, but just be consistent. Pick any platform. You'll find a lot of questions in there. Just practice consistently. So you don't have to be like stick to steps कि हाँ कि ऐसे बोला यही करना है. Pick anything up there. Okay.
Sir, and also I want to ask that it is possible to crack any language in 6 months. Like I'm in the third year, so is it possible to crack any language like Java in 6 months? like it is possible. It just go with the right track. Like कि पहले spend a week यहाँ की to learn basic syntax यहाँ की इसमें कुछ क्वेश्चन डिक्लेयर कैसे होती है. Then मतलब एक बार तुमने syntax कर लिया उसके बाद मतलब algorithms और data मतलब सेम ही होते हैं हर एक में. कि उसमें भी इंटीजर है उसमें भी इंटीजर है सब में इंटीजर ही हो उसमें array है उसमें array है सब में string है बस वो कि वो डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं किसी में डिक्लेयर करने का तरीका कुछ और होगा उसमें तरीका कुछ और होगा बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा हर एक में. So yes, you can. Within 6 months, you can learn a language and you can learn BSA even like good levels, like almost intermediate in a certain language. So it is possible. मतलब ऐसा आराम से possible है. It just spend like 2 to 3 hours a day, practice, and you will get there. And also, sir, I want to ask that learning many languages will help, or learning of one language will help. Learn one. Don't rush into things. Learn one language अच्छे से. And like if you are getting in a job now, so what if you have just one language and you are good at it, and let's say you are going for product companies and you are good in DSA there, so it is more than enough. And let's say you have one project on your resume also, so that is more than enough. No one asks for ki how many programming languages you have. So if you have one language, that's okay. So you don't have, once you are confident in it and you want to explore more, then you can go in other languages also. But focus on one for now. Like if you are starting now and you are in third year, focus on one language and be good at it. That's sufficient. So, in your time, which language did you have done in your time? Like don't like uh, I won't be the right person to answer. Matlab, if follow what I did because I have been in many different things. I did Android development also in Java. I did Python, React Node. So वो थोड़ा थोड़ा सब कर लिया. But अभी third year में वही मत करूँ. And for this problem solving DSA के लिए जो interviews के लिए उसमें I always did C++. If you are asking like what I did, but don't go for other languages for now. Stick to one and learn it अच्छे से. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ कि मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टार्ट अर्ली. जो तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्टार्ट अर्ली. अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो जो तुम्हारा मन करे करने का उस साइड करो. मतलब उसमें एक्सप्लोर करो कि हाँ हमें क्या पसंद आ रहा है और उस हिसाब से करो. बट थर्ड ईयर में आके ये मत करो कि हाँ कि हमने क्या क्या करना है. स्टिक टू वन. अब स्टार्ट कर रहे हो तो उस पर फोकस करो. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for today's Okay, session. I have also one question. I have one Good question. afternoon. Uh, First of all, welcome to CCET. ये क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वेलकम टू CCET. बस CCET वेलकम. ठीक है. अब बहुत दिन के बाद आए, हमें बहुत अच्छा लगा. And We have Anuj sir also with us right now. Anuj is also there. Yes, Anuj sir is currently in the meeting. So he was there, right? Anuj, welcome. Yes. Thank you, sir. Actually, for this session, we were planning from last 6 months. Now we executed. Okay, so thank you for coming, and it is very good that you are giving some valuable advice to the students. Okay. One question is how much it is important to follow the curriculum of the college, like syllabus and all. Is सर it आप अभी सामने important? हो तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. आयुष बता रहे. क्या बोल रहे हैं? आयुष जैसे मतलब मैं टोटली नहीं करेंगे. ऑब्वियसली उसके बेसिक्स तो होते ही हैं हर एक चीज के. पर वो एक चीज डोंट जस्ट स्टिक टू इट. मतलब उसके बाहर बहुत सारा है कि वो 10% है हमारे करिकुलम में और जो एक्चुअल वर्ल्ड World में is to होगा. explore. That is another thing. World is to explore. बट सर जो But हमें जाके काम करना होता है ना जैसे कंपनीज में जाके जो हमें काम करना है वहाँ वो नहीं होता है कॉलेजेस में. बट यहाँ की कंपनीज में जाने के लिए जो करना होता है जैसे DSA वगैरह वो हमारे पास एक दो सब्जेक्ट होते हैं.
पर यहाँ के बच्चों को अगर किसी ने और फील्ड में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है या फिर मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो वो इंट्रोडक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि हाँ कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, तो उस मामले में वो अच्छी। Yeah, thank you for giving these advices. Okay, अभी 2:20 हो गया, और एक्सटेंड करना है अनुज छाबरा? Yes, sir. अनुज करेंगे। अभी सर का session. हाँ अनुज बताओ, ये सेम आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताओ सर। अच्छा, सेम क्वेश्चन का सर। हाँ सर, मेरे एक्सपीरियंस में तो काम आता है जो कॉलेज में पढ़ते हैं। like which are the subjects that the students should give more stress? Like all subjects they cannot, because they are only one person and there are multiple subjects. So in your list, how many subjects are there and which are those subjects? जैसे सर, जैसे एक तो डीएसए का सब्जेक्ट तो होता ही है DSA, सेकेंड ईयर में। yeah, data structure, right? यस सर, डेटा Data स्ट्रक्चर। structure, okay. वो और एल्गोरिथम्स का एक सब्जेक्ट होता है, Algorithm. वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत काम आता है। जब तुम किसी कंपनी में जाओगे तो मोस्टली लिनक्स तुम्हारे डेव मशीन होगी या Linux operating system. डिप्लॉयमेंट। सो सर, ऑपरेटिंग सिस्टम काम आएगा, डेटाबेसेस काम आएगा। डेटाबेसेस हर जगह यूज होंगे। Database, another very good subject. Yes. कंप्यूटर नेटवर्क्स काम आएगा। इफ यू आर, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स एज सच तुम्हें दिखे ना दिखे, बट काम आएगा फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। लाइक इफ यू गो इनटू बैक एंड, तो इट हेल्प्स नोइंग व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स काम आता है। वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट होता है, इट विल हेल्प यू बिल्ड द बेसिक्स। अगर तुम्हें फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में जाना है तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। एंड एक लास्ट सब्जेक्ट मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। Machine learning. These are of expert level, right? यस सर, बट मतलब जैसे ये थर्ड फोर्थ ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट होता है मशीन लर्निंग का, इट लाइक अगर किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो, एंड प्रोजेक्ट्स बनाने, जस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने, तो भी उसके लिए भी मशीन लर्निंग वाला सब्जेक्ट इज यूजफुल। सो आई थिंक यही सारे सब्जेक्ट्स जो मेरे को ज्यादा काम आए हैं। Okay, thank you. Now, Anuj, continue. So I would like to thank Ayush sir for giving insights and taking such a wonderful session. And now we have Anuj sir with us. He is currently an SW at Microsoft and he'll be sharing his journey with us. Okay. Thanks, Anurit. Firstly, what year is this? Like, is this first year, second year? Third year. First and third year. First to third, first, second, and First third. to third. Oh, first, second, third year. Okay. 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 Like, I'll first introduce myself. I am Anuj. I graduated from CCET in 2021. Like, is like everybody here fine with Hindi? I'll mix Hindi and English. क्योंकि यहाँ पे आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ, एंड यहाँ पे पीपल प्रेफर इंग्लिश, तो आई एम जस्ट आस्किंग किसी को भी अगर प्रॉब्लम है मतलब हिंदी से, लाइक आई डोंट थिंक कोई होगा वैसे तो, बट हाँ तो ठीक है, आई मिक्स। हाँ, तो मुझे क्यों बुलाया इधर? I did GSOC in my third year. उसके बाद I was a intern at Amazon in my fourth year, जो हमारी 6 months की internship होती है. And then I joined Microsoft. So I'm currently in Microsoft. This is the office. So yeah, I'll be talking to you about my journey. पहले तो एक, वैसे तो मैं हर बार बोलता हूँ, कोई करता नहीं है, बट कोई अगर कैमरा ऑन करना चाहे तो इट विल बी गुड। लाइक कुछ बोलूंगा नहीं मैं, या कोई भी, आई गेस। ठीक है, दीपक है स्टेप्ड अप, कोई और, चलो ठीक है। तो लाइक आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग एज सच, मतलब कुछ लिखा नहीं है। तो किस बारे में जानना है तुम लोगों को?
I'll talk about that maybe GSOC के बारे में, companies के बारे में. GSOC. uh, GSOC would be good. okay, Sahil. Okay, I'll talk GSOC. तो अरे मतलब यार अगर बस वगैरह किसी व्हीकल में हो तो अच्छा नहीं, वो नहीं है, ठीक है, सॉरी. ऐसा लग रहा है मूव कर रहे हो. हाँ. ओके, सो GSOC, अगर जिसको नहीं पता व्हाट GSOC इज दिस, I would say, opportunity by Google to involve more folks in open source. तो गूगल करवाता है हर साल ये, आई थिंक 2005 और 6 से दे हैव बीन रेगुलर विद इट. हर साल गूगल कम्स अप with this program called GSOC, Google Summer of Code, in where मतलब गूगल अनाउंस करता है a list of open source organizations which have like their projects open sourced somewhere, GitHub, GitLab, or elsewhere, and encourages people to work on them. They uh, Google pays the people, like let's say you work on some project, you will get paid through Google for working on the project, and like you get to learn a lot. So there are projects like you might have used in your like everyday, just VLC है, VLC everybody uses. um, what else? MATLAB का भी, I, as far as I remember, there is some project that participates in GSOC. If you use a Linux distro, uh, Linux use करते हो तुम, probably कुछ ना कुछ participate कर रहा होगा GSOC में. तो there's a lot of organizations you can get to know according to your interests and your what you know. So I did my GSOC in my third year. I participated with this organization called KDE. For like, if you don't know what KDE is, KDE is a like a Linux desktop environment. Uh, okay. So what Linux desktop environments are? Let's say you are using some Linux distribution, for example Ubuntu या फिर Manjaro या कोई भी. तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बेसिकली हेल्प्स विद द UI, जो तुम्हें UI दिखता है, that is through the desktop environment. So KDE does that. उनका desktop environment is called Plasma. You might or might not have heard of it. And they make other products as well. They're like professional products. Like Krita is one of their products, which is like a Illustrator kind of software. Apart from that, I think uh, what else? They have other projects also. There's one thing called KD Connect, which is like something to connect your laptop and your phone. There's an app, and you can use it to control your laptop and receive notifications on your laptop. So there is stuff like that. So KD में I did like mostly web development work, nothing related to the core product that KDE builds. उससे कुछ लेना देना नहीं था. I worked with their web team. तो like web में they have a lot of websites. तो they were like revamping everything. बहुत पुराना था उनका जो भी था. तो we did that, and like they were also changing their authentication system. तो authentication basically login वगैरह देखने में बहुत ऐसे simple सा लगता है. There's just ID पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, उसमें क्या है. बट द like KD like is a huge organization. उनके बहुत सारे products हैं, and everything logs in through a single portal. जैसे you might have seen हर जगह Google login होता है. तो I had to build something like that for KD, ताकि उनकी हर वेबसाइट पे we can log in through a single ID password. So I did that.
या तो जी सॉक के बारे में लाइक क्या जानना है तुम लोगों को, तो आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली. दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, कैसे होता है, प्रॉब्ली. हाँ, हाउ टू गेट स्टार्टेड. तो लाइक getting started depends Uh, on like okay, yeah. and how to choose and a special organization like कि इतनी सारी है, इट्स लाइक ओवरवेलमिंग कि हर एक के बारे में पढ़ पढ़ के उसका किस चीज को चूज करें, लाइक कैसे डिसाइड करें. तो हाँ, चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो लाइक अलग अलग तरीके हो सकते हैं फॉर यू टू चूज अ ऑर्गेनाइजेशन. मे बी यू ऑलरेडी नो सम टेक स्टैक. तुम्हें मतलब तुम्हें जावा आता है, तुम्हें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आता है, तुम्हें मशीन लर्निंग आता है, तुम्हें कुछ भी आता है. तो दैट इज वन वे ऑफ चूजिंग, बिकॉज कि तुम्हें वो जो उन्हें चाहिए वो तुम्हें आता है. You could do that, or there is one other way. uh, some product you have interest in. Let's say तुम VLC यूज करते हो, तुम OBS यूज करते हो, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर. तुम्हें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तुम्हें मतलब इतना पता नहीं क्या कैसे करना है, बट दैट इज ऑल्सो वन वे. तुम ऐसे चूज कर सकते हो कि तुम्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा. These are like mostly the two ways people choose organizations. Uh, मेरे केस में I chose according to what I know. I knew web development, तो I went with that. बट ऐसे नहीं है कि like तुम्हें इंटरेस्ट है let's say VLC में और तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. थोड़ा लाइक बेसिक नॉलेज हो, लाइक जो उन्हें चाहिए वो ना आता हो, बट स्टिल लेट्स उनको VLC एज फार एज नो C++ में काम होता है उनका. तो तुम्हें C++ आता है, बट ये नहीं पता कि VLC जैसा कुछ कैसे बनाए, क्योंकि तुमने वो बेसिक प्रोग्राम्स लेके आए. दैट इज फाइन, मतलब इतना चलता है, तुम जाके सीख सकते हो. बट ये नहीं कि मान लो तुम्हें HTML CSS आता है और तुम जा रहे हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिनका कोई लेना देना नहीं है HTML CSS से, दे वांट C++ डेवलपर. तो वो इशू रहता है. तो जस्ट या गो विद योर इंटरेस्ट, और लाइक गो विद व्हाट यू नो. दैट्स व्हाट आई वुड से. उसके अलावा लाइक हाउ टू गेट इनटू GSOC या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज नो लाइक सेट प्रोसेस एज सच, मतलब वेरी करेगा सबके लिए. तुम क्या कर सकते हो, आई विल टेल. तुम you should like there's a if you go to the GSOC website, summer of code dot with Google, it's something like that, summer of code with Google. So you go to their website, you check the organizations. There you'll see the organizations. जैसे अभी लाइक व्हाट्स इट्स दिसंबर राइट नाउ, अभी थोड़े टाइम बाद शुरू होने वाला है, मार्च के अराउंड दे अनाउंस द प्रोजेक्ट्स, आई थिंक फेब मार्च. तो अभी तुम देख सकते हो, पिछले साल के तुम देख सकते हो. तो इफ यू चेक द ऑर्गेनाइजेशंस, यू सी देयर लिस्ट, यू विल सी लाइक अगर पिछले साल जैसे मान लो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स था, तो इट इज हाईली लाइकली दैट इस साल भी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होगा. दे डोंट just change everything. So you can go to the organization page and check like what were their projects last year. You can go through them and pick something that interests you, या तो टेक स्टैक की वजह से या प्रोडक्ट की वजह से, and join their communication channels. There will be IRC, or there will be Telegram, there will be mailing lists. Join करो, understand like what they expect, how to like talk with people there. Just don't like jump in and start DMing people. DMing is like one of the worst things you could do in any open source organizations, because like it defeats the purpose. उनका काम है ओपन होना, like they want everything to be open. And अगर तुम DM कर रहे हो, मतलब बहुत लोग like a lot of people are interested in GSOC.
मतलब हम मोस्टली इंडिया से ही भरे पड़े होते हैं, एंड इफ एवरीबडी स्टार्ट्स डीएमिंग द मेंटेनर्स of a project, so like it gets difficult for them. So don't DM anyone, just learn how things are working, how people are communicating, then introduce yourself there, and what you are interested in. Somebody or the other will share a link. मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भेज देंगे, कुछ गेट रिपोजिटरी का लिंक भेज देंगे तुम्हें, तो कोई ना कुछ तो भेज देगा, और कुछ ना कुछ तो भेजेंगे. Go there. अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो पढ़ो. What they expect. There's a contribution guideline in most open source projects की what they expect. क्या कोडिंग स्टाइल होना चाहिए, और कैसे कमिट लिखने हैं, कैसे पुल रिक्वेस्ट करनी है, क्या करना है. Just read that documentation. You should know about it. And उसके बाद like जो project है, the project you're interested in, try to build it locally. उसकी रिपोजिटरी में देयर विल बी अ डॉक्यूमेंटेशन ऑन हाउ टू बिल्ड इट. वहाँ जाके बिल्ड इट लोकली, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको बिल्ड करने में भी ऐसे नहीं होता कि तुम बस 4 लाइनें फॉलो करी और हो गया. आजकल में भी हो भी जाए बिकॉज ऑफ डॉकर एंड कंटेनर्स, बट नॉट एवरी प्रोजेक्ट देयर इज कंटेनराइज. तो हो सकता है तुम्हें सेटअप करने में बहुत टाइम लगे, तुम्हें हेल्प लेनी पड़े सेटअप करने में. डू दैट. उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सेटअप कर लिया उसके बाद यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, हाउ द कोड इज सेटअप. तो लाइक व्हाट आई प्रेफर, जैसे ओपन सोर्स कोई भी प्रोजेक्ट है उसको समझने के लिए, आई विल फर्स्ट सेट इट अप लोकली, एंड देन आई विल ट्राई टू लुक एट देयर पीआरस, जो मर्ज्ड पीआरस हैं, कि कैसे काम कर रहे हैं लोग, क्या 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 करते हैं. ये सब देख के काफी समझ आता है. तो आई ट्राई टू लुक एट देयर पीआरस, एंड देन फाइंड योरसेल्फ अ बग. तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें, कुछ easy to solve issue. Try to understand it, try to see what they want, and try to fix it. But just check कि nobody else is already working on it. ऐसे मतलब it's not a race कि तुम क्या मैंने पहले कर दिया, अब मेरा मर्ज करो. There, if somebody is picking up an issue, they will probably comment कि I am working on it. Just if it has been a while, उन्होंने मतलब मान लो 1 महीने पहले कमेंट किया था and the issue is still open, तो you need to like confirm कि hey, are you still working on this? I'm trying to see. ऐसे कुछ भी पूछ लो. If nobody replies, you can go ahead and work on it. So yeah, that's basically how I would start. Does anybody have a question here? I don't think so. Okay. GSOC के बारे में किसी को और कुछ जानना है? Sir, sir, actually, you also had learning from online courses, I think so. So, just I just want to ask, where you get to get your doubts solved? Regarding courses? Yes, like I am doing a Java from Geeks for Geeks, but I defined it from online, like from Telegram. So I have some doubts. So where can I get my doubts cleared? और डाउट्स जैसे तुमने वो कोर्स खरीदा है या तुम जस्ट यू आर लर्निंग? देयर इज अ कोर्स, राइट? और यू आर जस्ट It's a लर्निंग? course. It's a full course, but I get from someone from my friend on Telegram. अच्छा, ऐसे ऐसे कोर्स है. ओके. फिर हाँ, तो लाइक
depends what you need help with. मतलब most of the time, like in almost 99% of the cases, जो तुम्हें पूछना होगा वो तुम्हें ऑनलाइन ऑलरेडी मिल जाएगा. 99%. You just need to be good at googling. एंड वो बहुत काम आएगा तुम्हें हर जगह ही. तो ट्रायल सर्चिंग फॉर इट. तुम्हें नहीं मिलता तो बहुत कुछ है पूछने को. दोस्तों से पूछ लो. स्टैक So ओवरफ्लो. like I'm from mechanical, so not many so if people are doing from मतलब इतने लोगों को वो है नहीं कि मोड़ के आईटी सेक्टर में जाए. So वो सीएससी वाले से पूछ लो. मतलब कोई तो जान yes पहचान. so सीएससी वाली तो मतलब उनसे ज्यादा है नहीं ना, कोलैबोरेशन नहीं है उनके साथ. So वो प्रॉब्लम आती है. कोई क्लब वगैरह में नहीं हो तुम? नहीं मतलब आई वो उनका कोई क्लब में मैं ज्वाइन ही नहीं हो रखा हूँ. यहाँ पे हमारे कॉलेज में है नहीं कोई आईटी का कोई ऐसा क्लब. एक एसीएम है. यार ऐसे तो मत बोलो. एसीएम ने तुम ऑर्गेनाइज करा है, तुम बोल रहे हो कुछ है नहीं. ये एसीएम ने मुझे ऐड नहीं किया ना, मतलब ऐसे कह रहा हूँ. अच्छा नहीं, मैं एसीएम का नहीं कह रहा. आई एम जस्ट सेइंग कोई भी डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, कोई किसी में जाओ. अगर उसमें ऐसे किसी में हो तो उसमें सीएससी वाले लोग होंगे, उनसे पूछो. ऑनलाइन पूछो. स्टैक ओवरफ्लो पे पूछो. सीनियर से पूछ लो. किसी से भी पूछ सकते हो ऐसे. मतलब ऐसे नहीं कुछ like रेडिट टू रेड पे जैसे रेडिट के क्लब्स होते हैं वहां पे आपने ऐसे कभी डाउट पूछा हो, ऐसे पूछा था? मैंने एज सच वहां पे नहीं पूछा. बट हाँ, वहां से पूछ सकते हो. मेरे केस में तो मेरे को ज्यादातर जो भी डाउट रहते थे ऑनलाइन कुछ ना कुछ मिल जाता था. तो इतना रहता नहीं था. बाकी क्लासमेट से पूछ लो क्योंकि आई वाज इन सीएससी. तो मेरे में नहीं था कि सीएससी वालों से बोलचाल नहीं है. Also, if you ask the right question ना तो कहीं पे भी पूछ लो. जैसे गूगल पे भी ठीक टाइप करोगे तो मिल जाएगी. तो टेलीग्राम कहीं से भी अगर ठीक चीज पूछोगे तो आंसर मिल ही जाएगा. कंप्यूटर साइंस का ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा जो अनआंसर्ड हो. लाइक सम काइंड ऑफ कोर्स में, मतलब कोर्स में अगर टीचर ने कुछ गलत बता दिया हो, या जैसे कि कभी कभी मैं कोर्स कोडिंग निंजा से भी कर रहा था, उसमें छोटे मोटे डाउट आ रहे थे कि टीचर ने गलत किया हुआ था. सो मैं फिर मैं उसमें सोचने लगा कि उन्होंने गलत किया तो मैं कैसे उनको गलत कह सकता हूँ. वो टाइप का था कि टीचर ने गलत किया हुआ था उसमें, प्रोफेशनल कोर्स में गलती थी. मतलब हर जगह गलत करते हैं वो, तभी करेक्ट करते हैं ना चीजें. तो हो सकता है गलत हो सकता है तुम्हें गलत लगाओ. पूछ सकते हो तुम. वो मान लो डाउट नहीं होता. फिर वो वही आ जाती है बात कि वो डाउट नहीं होता कि टीचर ने गलत किया हुआ तो मैं किससे पूछूं, क्योंकि वो तो कोई कोर्स कर ही नहीं रहा. हाँ मतलब ऐसे, क्योंकि तुम अगर अब टेलीग्राम से ले रहे हो कोर्स तो तुम्हें मिलेगा नहीं डायरेक्ट सपोर्ट उनकी तरफ से. यू कैन. अब मान लो कुछ किसी कोड में ही प्रॉब्लम होगी ना कि ये डाउट है, तो तुम हाँ वो हाँ. कोड डालो स्टैक ओवरफ्लो या कहीं पे एंड अपना क्वेश्चन डाल दो. कोई ना कोई बता देगा अगर अच्छा. ऐसा है. या फिर कोई मतलब बना लो सीएससी वाले दोस्त. उनसे उनसे उनको दिखा दो कि ये ऐसे, इसने ऐसे बोला है, ये गलत है क्या, या मेरे को गलत लग रहा है. दिखा दो किसी को भी. ओके सर, ये बोला. आह, और किसी को कुछ पूछना है? सर डीएससी के किस लेवल के क्वेश्चंस तक आते हैं इंटरव्यूज में जो कोडिंग राउंड्स हो सकते हैं? डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, राउंड टू राउंड. अब मान लो जैसे ऑनलाइन टेस्ट वाला राउंड है, दैट इज यूजुअली मोर डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के होते हैं कंपेयर टू इंटरव्यूज. तुम्हें जिस कंपनी के बारे में जानना है, मान लो Amazon के बारे में जानना है, तो जस्ट लुक इट अप. पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें. और तुम्हें पता लग जाएगा कैसी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हैं. सारे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे. उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे. तुम्हें वो चाहिए तो सब कुछ मिल जाएगा. और मतलब लीड कोड पे प्रैक्टिस करते हुए किस लेवल के क्वेश्चंस, लाइक मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें? डिपेंड करता है तुमसे किस लेवल के हो रहे हैं. स्टार्ट विद इजी. थोड़े बहुत करो, बहुत ज्यादा मत करो इजी. क्योंकि अगर इजी नहीं हो रहे तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, ना कि प्रैक्टिस. ठीक है. तो इजी करो, फिर ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ मीडियम. एंड जब मीडियम होने लग जाए, क्योंकि नहीं होंगे शुरू में, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद थोड़े बहुत हार्ड कर लो. डिपेंडिंग ऑन द depending on how you like it and how where do you want to get to.
तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो. मोस्टली मीडियम, आई वुड से मीडियम इज अ गुड लेवल टू प्रैक्टिस. आई गेस नहीं, लाइक जी सॉक के बारे में तो किसी को नहीं जानना. और किसी चीज के बारे में, इफ एनीबडी हैज डाउट, कंपनीज के बारे में, हाउ टू अप्लाई या क्या रहता है. हाँ सर आईटी सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट मैटर करता है मतलब. लाइक करता है, काइंड ऑफ. लाइक ये नहीं कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ये सब नहीं मैटर करता. तुम अब कितना समझा पा रहे हो अपने इंटरव्यूअर को. मतलब तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन आता है, तुम ढंग से समझा नहीं पा रहे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम. एंड ऐसा भी होगा कि मतलब मान लो, एक मोस्टली यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश. कई बार तो ऐसा होगा तुम्हारे इंटरव्यूअर को हिंदी आती नहीं होगी. मेरे इंटरव्यूअर मतलब बाहर से थे, या फिर लाइक मे बी साउथ इंडियन हो, उनको नहीं आती होती कईयों को हिंदी. तो यू जस्ट नीड टू बी एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ कैट वाले वर्ड यूज करने हैं तुम्हें, वो कुछ काम नहीं आएगा तुम्हें. जस्ट being able to explain yourself. और किसी को किसी मतलब टाइप भी कर सकते हो, ऐसे कुछ है नहीं बोलना है तुम्हें. कुछ है तो पूछ सकते हो अबाउट लाइक companies, Amazon. I have experience at Amazon, Microsoft. I have friends at different companies. उनके बारे में पूछना है. इंटरव्यूज के बारे में. तो you can type or you can speak. फर्स्ट ईयर वाले कितने लोग हैं मतलब अप्रोक्सीमेटली? बिकॉज लाइक फर्स्ट ईयर वालों को तो यूजुअली पूछना होता है, उनको बहुत होता है. तो इंटर्नशिप कहते हैं वो करना जरूरी है मतलब कि, और अगर करना भी, अगर जैसे मैकेनिकल से हूँ मैं, तो इंटर्नशिप मतलब कितनी इंटर्नशिप करनी चाहिए? जैसे कि मैं अभी ना मैकेनिकल बैकग्राउंड से, तो हमारा थर्ड ईयर में अभी एंड में हमारा कहते हैं इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है. तो उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर मैं मैकेनिकल की तरफ से करूँ कि आईटी की तरफ इंटर्नशिप करूँ, और अगर ऐसे उसके विदाउट भी कर सकते हैं, अगर उसके मतलब अगर जो ड्यूरेशन होता है उसके विदाउट, उसके बिना भी कर सकते हैं. किसके बिना कर सकते हो मतलब? तो ड्यूरेशन होता है ना, 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, इंटर्नशिप टाइप पीरियड का होता है. सो अब मैं कंफ्यूज हो रहा था कि एक की मैकेनिकल करूँ कि ये अपना आईटी वाला करूँ. तो या मतलब मैकेनिकल को कुछ प्रेफरेंस होगा अगर मैं उधर आईटी सेक्टर में, कुछ फायदा होगा? मैकेनिकल को कोई प्रेफरेंस नहीं होगा आईटी सेक्टर में. मतलब उनको नहीं फर्क पड़ता. और इंटर्नशिप्स का ऐसा है कि जरूरी नहीं है, बट करो तो अच्छा है, इट्स बेटर. और मतलब बट ये नहीं कि मतलब ऐसे कुछ भी मतलब बहुत ही बेकार कुछ कर रहे हो तुम. कुछ रेलेवेंट होना चाहिए. मतलब ये ना हो कि तुम कोई किसी को पैसे देके तुम उनका काम कर रहे हो और वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं. ऐसे कुछ फायदा नहीं है इंटर्नशिप का. जरूरी नहीं, कोई कुछ नहीं है, इससे अच्छा ना करो, सीख लो कुछ. पर हाँ, इंटर्नशिप जितनी कर पाओ उतना बेटर है. कॉलेज के साथ साथ भी कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं. कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, तो वो कर सकते हो. मतलब सर हैं क्या अभी? हाँ. एंड हाँ, इंटर्नशिप ऐसे कर सकते हो. एंड मेरे को श्योर नहीं है, आई थिंक लाइक तुम्हारे मैकेनिकल वाले टीचर्स विल नॉट अप्रूव ऑफ योर आईटी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जब मांगते हैं. हाँ, तो वो लास्ट तुम्हें टाइम जो मैंने डेटा साइंस पे किया था, उसमें सेकंड ईयर में वो फर्जी था. मतलब उन्होंने 2,000 रुपये लिए थे और इंटर्नशिप का सॉल्यूशन भी खुद ही दे रहे थे और उसी को अपलोड कर रहा था. वो टाइप. वो मत करो. सर कोई वो तो हो फायदा, भी गया, मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया. वो हो गया, बट ऐसी चीजें मत करो, कोई फायदा नहीं.
मतलब ऐसे इंटर्नशिप, मतलब जो तुम कंपनीज में जाओगे उन लोगों को पता है कि ये कैसी इंटर्नशिप है, इसमें क्या मतलब ये कुछ सीखा या नहीं सीखा, उनको पता रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। कॉलेज में दिखाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए तो फ्री वाला ही बना लो, क्या पैसे देके। Yes. So what was your strategy to practice DSA? डीएसए के लिए लाइक Resources और platforms और कितने questions कैसे? मेरा तो ऐसे था, मेरे को पसंद नहीं था, मैं तो जितना कम हो सके ट्राई किया था कर लूं। तो आई आई डिड इट इन माय थर्ड ईयर, उससे पहले मैंने किया नहीं था। बट थिंग वाज मेरे थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में ही लॉकडाउन था, तो मेरे को वो ईज था क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन है, तो आई कुड स्टडी थोड़ा बहुत उस टाइम पे। तो अरे यार एक सेकेंड, हाँ। तो उसमें मैंने लाइक ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिसोर्स तो नहीं फॉलो किया। तुम्हें जो लाइक स्कूल में, सॉरी कॉलेज में जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं, मतलब वो सब तो यूज होते ही हैं, और टॉपिक्स भी होते हैं। तो वन थिंग आई सजेस्ट कि ऐसा कुछ ढूंढो कोर्स वोर्स, एंड उसका सिलेबस देख लो। उसमें तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो वो सिखाते हैं। और अगर तुमने नहीं खरीदा हुआ, अगर तुमने खरीदा हुआ है मतलब बढ़िया है, तुम उससे कर लो। अगर तुम्हें ऐसे फ्री में सीखना है तो बहुत कुछ है, मतलब तो टॉपिक्स देखो, सर्च इट ऑन यूट्यूब। अगर तुम्हें नहीं आता है समझो, देन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो ऐसे ही यू कैन यूज एनी वेबसाइट, गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, कोई भी वेबसाइट जो तुम्हें पसंद है, यू कैन डू दैट। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ऐसे कुछ होता नहीं कि तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और कर लो। तो लाइक बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहती है। दो तरीके कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव। तुम टॉपिक वाइज कर लो, आई आई थिंक वैसे बेटर रहता है, टॉपिक वाइज कर लो। अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो जस्ट पिक अ टॉपिक, देखो तुम्हें आता है कि नहीं, नहीं आता है तो सीखो, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड एक चीज जो काम आती है, मेक अ शीट और समथिंग, एक्सेल या जो भी, एंड उसमें डालते रहो अपने क्वेश्चन जो लाइक यू फाउंड समथिंग न्यू, या कुछ सीखने को मिला, या फिर जो तुमसे नहीं हुए। ऐसे लीड कोड पे आई थिंक लिस्ट होती है, यू कैन ऐड इट इनटू लिस्ट, उसमें डालो, या फिर शीट वगैरह मेंटेन कर लो कोई, उसमें डालो जो तुम्हें रिवाइज करने हैं, कि तुम्हें इसमें कुछ समझ नहीं आता या इसमें कुछ नया सीखा था, कुछ नया कंसेप्ट था। तो दैट वे इट हेल्प्स बाद में रिवीजन के टाइम। And sir, internships के लिए, like when you applied for Amazon in last semester, तो उससे पहले आपने अपने internship experiences में कुछ डाला था या कैसे बताया था अपना experience? अमेजोन के लिए जब मैंने अप्लाई किया, मेरे पास क्या था लिखने को, आई हैड लाइक केडी का ही जीसॉक जैसा कुछ होता है, इट्स कॉल्ड सीजन ऑफ केडी। मैंने वो लिखा था, दैट वाज वन एक्सपीरियंस आई हैड। एंड ऐसे एक दो छोटे मोटे एक्सपीरियंस लिखे थे। इट लाइक डजंट मैटर अ लॉट कि मतलब कुछ एक हो तो बढ़िया है, अच्छा है, रहता है, इट्स जस्ट अ टॉकिंग पॉइंट। तो इंटरव्यू से बात करने के लिए कुछ होता है तुम्हारे पास, नहीं है तो लाइक कुछ कर नहीं सकते, बट कुछ अच्छा है तो लिख दो। Skills required for GSOC, like there's no set skill कि ये करो तो हो जाएगा, डिपेंड्स। मतलब मोस्टली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड तुम्हें कुछ भी आता है
कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स में फिट हो जाता है. मेरे को उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट आती थी, तो उसका मुझे प्रोजेक्ट मिल गया. आई कैन सजेस्ट व्हाट व्हाट इज मोस्ट लाइक हेल्पफुल, क्योंकि वेब डेवलपमेंट लाइक फॉर एग्जांपल रिएक्ट या किसी में, एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, दोज टू आर द लाइक मोस्ट प्रेवलेंट ऑर्गेनाइजेशंस में. उसके अलावा बट अगर तुम्हें ये नहीं आता और कुछ आता है तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा. HTML, CSS, JS एक्सेट्रा, वेयर मैंने सीखना शुरू किया था हमारे सेकेंड ईयर में. आई थिंक वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट होता है. मैंने मतलब उसके साथ में स्टार्ट किया था. लाइक वो कोर्स भी चल रहा था और अपना मैं खुद से लाइक आई वाज लुकिंग एट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट खुद से, तो तब सीखा था. दिस इज लाइक मेनली फ्रंट एंड चीजें हैं ये. एंड लाइक आई प्रोफेशनली आई हैव नेवर वर्कड फ्रंट एंड. मतलब मेरा हमेशा अमेजोन में भी, यहाँ पे भी, माइक्रोसॉफ्ट में भी, इट हैज ऑलवेज बीन अ बैक एंड जॉब. तो हाँ, मतलब मेरे को आता ये था, बट ये कर रहा हूँ मैं, तो इट डजंट रियली मैटर तुमने क्या किया. आई कैन सजेस्ट लाइक वन थिंग कि अगर तुम्हें मान लो बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा, डीएस से तुमसे हो ही नहीं रहा, मतलब वैसे तो कर लो, बट अगर नहीं हो रहा तो फ्रंट एंड जो ओपनिंग्स रहते हैं, नॉट इन लाइक वेरी बिग कंपनीज, उन वहाँ पे उनको लाइक दे नीड डीएसए स्पेसिफिकली, बट स्टार्टअप्स में, अच्छी कंपनी में, द you can, if you apply for a front end job, you can get away without doing DSA. वो तुम्हें फ्रंट एंड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे. Okay, what do you recommend learning a particular language or learning add-ons like HTML से? यार HTML तो मतलब क्या ही है सीखने वाला. HTML मतलब कोर्स होएगा तुम्हारा, उसमें जितना कर लोगे उतना HTML भी बहुत है. तो एंड एक लैंग्वेज तुम्हें आती होगी कॉलेज में, दे टीच यू C++. अगर तुमने नहीं सीखी है C++, तो आई से कि जावा सीख लो या फिर पाइथन सीख लो. जावा इज गुड बिकॉज मतलब वो इंडस्ट्री वाइड यूज होती है. इट इज लाइक हेल्प्स विद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल. C++ में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. जावा में यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड लो लेवल डिज़ाइन जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वो जावा में बहुत अच्छे से सीख सकते हो. तो अगर तुमने मान लो नहीं किया है कुछ, तो यू कैन स्टार्ट विद जावा. मतलब पर ये नहीं कि C++ सीखी अभी मैं जावा कर लेता हूँ फिर मैं पाइथन कर लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होएगा. आई विल टेल यू, मैंने जब अमेजोन ज्वाइन किया, आई हैड ओनली लाइक यूज C++ एंड जावास्क्रिप्ट मोस्टली प्रोजेक्ट्स में. Amazon में I had to use Java, I had to use TypeScript, I had to use Python. ठीक है, कभी सीखा नहीं था कुछ नहीं, बस करना था काम. एंड इन माइक्रोसॉफ्ट आई हैड टू यूज C#, इनका ही लैंग्वेज है. आई हैड टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, हाँ थोड़ा बहुत टाइपस्क्रिप्ट भी नहीं का है. एंड आई हैड टू यूज गोलैंग, जो कि लाइक गूगल ने बनाया. तो कोई ऐसे कितनी ही लैंग्वेज सीख लोगे तुम प्रिपेयर होने के लिए कि मेरे को ये पूछ लेंगे कि तो मैं ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ. एक एक आती हो अच्छे से, या जैसे C++ आती हो तो यू कैन लर्न वन एडिशनल थिंग, मे बी लाइक लेट्स से जावास्क्रिप्ट और पाइथन और समथिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने में C++ में मुश्किल होएगा. क्योंकि इट्स अ वेरी low level language compared to the rest of these. तो yeah. वेब डेवलपमेंट के लिए अगर सीखना है तो HTML सीखो, CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो. जावास्क्रिप्ट कभी लाइक खत्म कर नहीं सकते. लाइक बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखो, बिल्ड समथिंग, एंड आगे फिर देखो तुम्हें कहाँ जाना है, बैक एंड में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है. तो बैक एंड में there's मतलब बेसिकली एनी लैंग्वेज यू कैन यूज इट एज अ बैक एंड लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट खुद भी यूज कर सकते हो, पाइथन,
C Sharp, Java, any language can work as a backend language. Front end के लिए you can learn a framework. React is the most popular, but ऐसे जरूरी नहीं है तुम्हें React ही करना है. But it helps you be like job ready because सबसे ज़्यादा opening you will see it will be for a React developer. क्योंकि most popular framework है इस टाइम पे. तो ऐसा कर सकते हो. बट कोई तुम्हें मतलब तुम कोई रिएक्ट के लिए हायर कर रहा है और तुम बोलो मेरे को तो एंगुलर आता है, तो ऐसे नहीं है कि वो मना कर देंगे. तो मतलब जो तुम्हें आता है वो अच्छा है, बट हाँ एंगुलर मत ही सीखो. Sir, at last I would like to ask from both of you कि क्या नहीं करना चाहिए, मतलब what are the don'ts? Don'ts, एक तो ये पेड इंटर्नशिप मत करो मतलब पैसे देके, क्योंकि मतलब ठीक है सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुम्हें, कुछ काम नहीं आएगा कहीं पे, पैसे ही वेस्ट है. इससे बढ़िया तो कोई खरीद के कोर्स कर लो तुम. कम से कम मतलब जो वो बना रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी, वो भी हेल्प करा देंगे कुछ. तो पेड कोर्सेज मत करो. अपने रिज्यूमे वगैरह पे झूठ मत बोलो, क्योंकि लग जाएगा पता. तुम सीजी पे मत लिखो झूठी, तुम प्रायर एक्सपीरियंस मत लिखो झूठे, क्योंकि बैकग्राउंड चेक होएगा हर जगह एंड वहाँ पे लाइक पकड़े जाओगे तो अच्छा नहीं लगता. मतलब तुम इतना कुछ करके आए हो और फिर ऐसे निकलो, तो वो रहता है. आई वुड से एक और चीज, ट्यूटोरियल्स मत देखते रहो कि बस एक के बाद एक के बाद एक, ये भी सीख लूंगा मैं, ये भी सीख लूंगा, ये भी सीख लूंगा. कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं आएगा. कुछ बनाओगे तो कुछ आएगा. हाँ मेन मेन ये 3 डोंट्स आई वुड सजेस्ट. ये झूठ बोलने वाली चीज के बारे में, देयर वाज लाइक जूनियर फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली, मेरे को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजी थी. तो उन्होंने लिख रखा था ही इज एन इंटर्न एट अमेजन व्हाइल आई वाज इंटर्निंग एट अमेजन. तो एक तो लाइक उस टाइम पे कर नहीं सकते इंटर्न वो लोग. तो मेरे को पहले से ही डाउट था. एंड आई कैन जस्ट लुक अप एनी एम्प्लॉय इन कंपनीज में, मैं नाम देख के ढूंढ सकता हूँ कि ये है या नहीं. तो ऑब्वियसली नहीं थे. तो मतलब बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मतलब मेरे को तो चलो क्या है, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, बट कोई रिक्रूटर को पता लगे तो इट्स नॉट लाइक अ गुड थिंग. तुम अगर कुछ ऑनलाइन ऐसे इनका अटेंड कर रहे हो कोर्स या कुछ, मतलब उसको भी लाइक इंटर्नशिप मत लिखो, बिकॉज इट इज नॉट इंटर्नशिप, इट इज अ कोर्स. वहाँ पे लिखा भी होगा. फिर मतलब तुम किसी कंपनी में जाते हो, वो तुमसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, तब क्लियरली पता लगता है कि ये नहीं था इंटर्नशिप. तो या ये 3 रूम्स हैं मेरे लिए. Ayush sir. Yes, see, apart from this, kid don't just keep thinking कि क्या करना चाहिए. Start on something. कि mostly जो अभी भी questions है या फिर लोग पूछते हैं कि क्या चीज से start करें, कौन सी technology सीखें, कौन सी language सीखें. When you have time, at least start on something. कि फर्स्ट सेकंड ईयर में तुम कुछ करना स्टार्ट करोगे, नई इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा किसमें इंटरेस्ट है. अब उसमें कैसे आगे बढ़ना है कि आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर को वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो इसमें क्या करूँ, मेरे को रिएक्ट सीखनी है तो इसमें प्रोजेक्ट ये है, इसमें क्या करूँ. आस्क दिस क्वेश्चन, ये डोंट आस्क डायरेक्टली दिस कि मैं सीखूं क्या. मतलब दैट इज अप टू यू कि तुम्हें क्या करना क्या है. और मतलब कंप्यूटर साइंस में सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी फील्ड है. दैट इज अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है. एंड अनदर थिंग इज कि फोर्थ ईयर में जब तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही है, उस टाइम ये मत सोच, उस टाइम ये मत करना कि अब हमें देखना क्या है. उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही करो. और ऐसे नहीं कि
उस टाइम पढ़ना मतलब पिछले दिन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो कुछ नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली कि जैसे बोला कि रिज्यूमे पे ये मत लिखो कि हमें ये भी आता है ये भी आता है, क्योंकि वो तुम ना लिखोगे, तुम एक दो चीजें लिखोगे और तुम्हें आती है वो चीजें, दैट इज फार बेटर देन कि तुम 100 चीजें लिखो और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। So can you please also share like what were the experiences that you mentioned before you were in Amazon, the internships that you did or something? uh, are you like asking Ayush? Yeah, I say. Yes, if I think he is unable to get it. Yeah, so before Amazon, it, the internships were like one or two, but I had experience freelancing before that. So that was also plus point, like because interviews they ask you questions like explain a time when you had a conflict in your team, or you had to put customer before something, or you push deadline. So in those experiences, I also always mention my experience as a freelancer. So because internships at that point, I had online internships or like there was one internship I did. It was a German company, so that was good. So like even if you have only one internship, that will also be good. But it's just you need to have a good experience in that, and you can share that. So pick any a startups that you get to learn good from them. That will also be good as an intern. But be it like वो ऐसे unpaid internships जैसे ना और वो certificate दे देंगे वो चीजें ना एक और चीज मैं बोल रहा था, अभी लाइक कॉलेज ऑनलाइन है ऑफलाइन है कैसे? Offline. ऑफलाइन ही है, अच्छा। तो लाइक ऑफलाइन है तो जस्ट लाइक ट्राई टू यूटिलाइज वट एवर टाइम यू कैन गेट, मतलब ऑनलाइन में तो एक्स्ट्रा बहुत टाइम मिल जाता था। अब जी में इफ यू if you स्टार्ट यू शुड स्टार्ट लाइक एज सून एज यू कैन, तो जस्ट यूज योर टाइम। Yeah, I if think this. anybody else has any doubt, he may ask. Oh, किसी को लाइक कुछ भी जानना तो you can. So I think we have come to an end of the session. Yeah. And I would request everyone to turn on the camera so that we can take a screenshot. So I would like to thank Anuj sir and Ayush sir for such a wonderful session and taking out time from their busy schedule. And we learned a lot from it and we'll definitely work harder from today. It was a very motivating session. And I would also like to thank the participants for being and joining in. So, thank you.